Namaskar and welcome to this exciting episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science or truth, the study of truth. And opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आज मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ because और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो yesterday I did a live show in the night और अभी एक live show कर रहा हूँ और I'm trying to catch up before I travel again and नहीं तो सारे shows miss हो जाते हैं आप सबके साथ. So thank you all for joining. Thank you for liking our channel. Thank you for promoting it. And thank you for liking our content. आज बड़े स्पेशल गेस्ट हैं मेरे साथ. You all know him, Desh Kapoor. Let's welcome Desh Kapoor ji from Drishtikon. Thank you. Namaste. Namaste, Aditya ji. इतना I've been so much out of touch for last 15 days. अच्छा भी लगता है because we are out of touch. और थोड़ा सा we focus on ourselves. और सतोलॉजी का इतना अच्छा फीडबैक है पूरे इंडिया में. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग हियर हमारे शोज को और हमारे कोर्सेज को भी लोगों ने लाइक दे आर स्टार्टिंग टेक इट मेन स्ट्रीम नाउ. लेकिन ये जो वॉर चल रहा है इजराइल का और ये यूएसए का, हमारा इंडियन अमेरिकन पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग ही रहता है बेस्ड ऑन द फ्रॉम द इंडियन मीडिया एज वेल एज फ्रॉम अमेरिकन मीडिया. सो हाउ डू यू सी द लेटेस्ट फाइट इन द प्रेसिडेंशियल डिबेट? क्योंकि विवेक रामास्वामी इतना एक्यूरेट बातें कर रहे हैं हर जगह. And See, the thing is, see, मेरे ख्याल से ना इस समय जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है और जो अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है बिकॉज ऑफ how the things are being changed like within the US that एक ऐसी फोर्स का ऊपर आना बहुत जरूरी था. डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने पीछे कर दिया बट दिस गाय इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप. उसका जो ओपनिंग रिमार्क था ना, मैंने एक्चुअली वो अपने पिछले वाले न्यूज़लेटर में लिखा है, दैट इज गोइंग टू बी एपिकल, that is going to change and bring some kind of a tectonic shift within the American politics itself. And the reason is because उसने विवेक रामास्वामी ने आते ही पहला अपना जो पॉइंट था उसने यही निकाला, जो पहला रिमार्क था उसका, उसमें ही एक्चुअली attacked obviously the Biden and all those people as well as his opponents, but also Ronna McDaniel, who's the chairwoman of Republican Party. One, and second, the media itself. Many people have said it is by far the best opening remark ever made in any of the presidential debates. And if that is so, and on the other hand, like what happened was कि जो Republican Party थी, उसकी ये जो चेयरवुमन है रोना मैकडोनाल्ड, उसने कहा कि he is an a-hole and he won't even get 1 cent from the party. और उसका मतलब ये है कि जो रैंक एंड फाइल है उस पार्टी की, रिपब्लिकन पार्टी की, वो तो विवेक रामास्वामी के साथ है, बट जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको टारगेट कर रही है. इसका मतलब ये है कि रिपब्लिकन पार्टी में इटसेल्फ एक रिफ्ट है स्ट्रेट डाउन द मिडल. There is a part of the Republican Party that has already aligned itself to the Democratic establishment, which is part of the overall, we know from Twitter files with social media, the intelligence and all, the deep state itself. So basically the way I put in the newsletter was that we, on one side, we have Donald Trump and Vivek Ramaswamy who are saying that they want to dismantle the deep state. The other side is the deep state. So एक तरह का जो अमेरिका में जो एक राइट डाउन द मिडल एक ब्रेक है, वही ब्रेक एक रिपब्लिकन पार्टी में दिखाई दे रहा है. एंड आफ्टर दैट the news has come from various people that actually the RNC is going to dump Ron DeSantis and is going to heavily fund
Nikki Haley, because she's the one who's taking on, Vivek. So basically, if that is the Indian or against Indian, Indian American Indian versus against Indian, right? एंड वो उन दोनों का काफी चला भी है आपस में एक दूसरे के खिलाफ, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई शी इज काइंड ऑफ लाइक द बुल डॉग हु इज गोइंग आफ्टर विवेक रामास्वामी, एंड विवेक रामास्वामी नोज दैट एंड ही इज गिविंग इट बैक. क्रिस कोमो का जो इंटरव्यू था, that was pretty yeah, very damning. strong as well. So the way I see it is that now at this stage, if Donald Trump does not, run for the Republican Party, अगर वो nominee नहीं रहा, and if Vivek Ramaswamy is taken down, because the last time this kind of a anti-establishment, anti-deep state kind of a candidate came, that was Tulsi Gabbard. तुलसी गैबर्ट को किस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेज से निकाला गया वो हम सब जानते हैं. तो ये सेकंड टाइम है, and second time also he has openly challenged, and they will be fight to actually bring him down and take him off the stage, because he is too embarrassing for the establishment. और अगर ऐसा हुआ, there will be a very very big pushback, very big blowback, because जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वहां पर on the other channels, and he has gone and like done all those things, अपने शो चलाए हैं, वैसे ही इसके साथ भी होने वाला है, because he doesn't need the money that RNC has. He has his own money. I think he has around 800 million or something that he's trying to play with. So it'll be very interesting कि हमारे यहाँ पर ये जो next election है, that will be extremely decisive in many ways, and if things don't go, और उसके बाद like we all know very recent, पिछले हफ्ते ही वो निकला है उसका जॉर्जिया का फुल्टन काउंटी में जो कुछ हुआ, जो कपला हुआ है. so इलेक्शन तो रिग हुई थी, तो कपला तो हुआ था. एक्चुअली क्या है कि जो अमेरिका का हुआ भारत में बना हुआ है, अदर प्लेसेस आल्सो. अभी अमेरिका में वी सीइंग ए डेंजरस ट्रेंड ऑफ कि हाइडिंग द इस्लामिक टेरर. एक डेंजरस ट्रेंड है वो कि लाइक पहले क्या होता था कि earlier in USA we were completely convinced that the law is going to protect us. अभी यहाँ पे now the law is hiding the terrorists, like the one happened in Los Angeles, which was completely black. The media did not show that कि जहाँ पे a Muslim driver tried to kill people in Long Island. And even the Florida में जो gun shooting हुआ था, उसमें there was a Muslim person who was attacking the pub, and they hid it completely. So many terror incidents which are religiously oriented were hidden, and this is the problem for normal citizens like you and me, where we are scared of going to the malls now. I told my kids, get everything from Amazon, no need to go to the malls. So what is the general segment if the politics आजकल चल रहा है, war based politics, because ultimately this is going to bring the conflict back in the US. It is going to bring in. Right. Yeah, I agree on one front. On the other, क्या हुआ है कि there is a very strange kind of a shift and leaning towards Israel from most of the even left-wing media organization, even CNN, which is kind of strange, because मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था. मैं ये सोच रहा था कि they'll actually go for Hamas, but I think all of them are kind of being pushed towards Israel. So that's one thing. But on the other side, ये जो unchecked immigrants और illegal immigrants जो वहाँ से आए हैं, वो अगर मैं अभी पीछे देख रहा था किसी के बैकयार्ड में से लोग घुस रहे हैं, hundreds में आ रहे हैं, and the countries they are coming from, and he's asking them, Turkey and some other Middle East countries, and also some South American countries. Now Turkey and Middle East countries से आने का मतलब ये है, and even China,
lots of Chinese are coming in. Now हमने पिछली बार बात की थी कि 18,000 PLA सोल्जर्स एक्स सोल्जर्स पकड़े गए थे. तो अगर 18,000 PLA एक्स सोल्जर्स पकड़े गए थे, वो यहाँ कर क्या रहे थे? अगर इतने सारे चाइनीज अगर यहाँ आ रहे हैं लाखों की संख्या में, तो उसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग ऑन व्हिच इज मिसिंग द आई. एंड that is on one side. The other side is suddenly after having so much of back and forth and fighting and battles, अभी पीछे ships के अंदर और भी वो हुआ, almost incidents हुए हैं. Suddenly Xi Jinping is here in the US and he's trying to um, like approach Biden and make friendship again, which is kind of strange. क्योंकि जो चाइनीज अमेरिकन जो कमेंटेटर्स हैं और जो जानते हैं इसको, और जो ये पूरे मीडिया को जो पूरे एस्टैब्लिशमेंट को सीसीबी के, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट अ डिसेप्शन, which could actually be true, because what they are saying is that he has not taken his eye off of Taiwan. He is very, very clear that that's what he wants. If that is what he wants, eye on Taiwan, then US needs to be really serious about and very careful about what he's trying to do here. So एक तरह से ये जो हमास का जो कुछ हुआ, उसने एक चीज तो यहाँ की है कि जो सोसाइटी को एक बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है. There is a very, very strong lobby for Hamas and for Palestine. But like I think it was today, there was a rally वहाँ न्यूयॉर्क में, बहुत बड़ी रैली थी. So many people killed in Yemen, so many people, other Muslims got killed in other countries. No rally for them. Only this cause. Nobody cares about them. Nobody cares about them, because it's not about Muslims being killed. Like it is being against Jews. Like it's basically Hamas ki Or ideology. Hindus. They target us and they target them. The only two Right. people they target. So many Right. Christians got killed by Muslims. They don't talk about Christians also. Yeah, they don't care, because see the thing is कि उनका जो फंडा है, जो कतर बेस्ड और जो ये जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट बेस्ड जो पूरी इनकी आइडियोलॉजी है, उनका तो बहुत क्लियर है ना. मतलब यहूद और हनूद, so Jews and Hindus, and as long as we are there, it is a problem. And they have, I mean, like I was listening to one of the clips from the Arab this thing, and वो एक Palestinian anchor थी who was saying कि the attack on Israel was so beautiful, it was almost like a Hollywood movie. And the Hamas guy was saying that yes, we deceived them, because we were showing everything that we are doing on the West Bank, although the real work was going to happen in Gaza. And he very clearly said that our aim is very, very clear. It has to Middle East has to be emptied of all the Jews. उनको सब खत्म करना होगा यहाँ पर. तो उनका एम बहुत क्लियर है. वेदर आई मीन वी कैन कीप सेइंग कि वो Palestinians are all nice and peaceful, and many may be actually, but the point is that time and time again, अब देखो जिन लोगों ने उस लड़की को जो लेके गए थे, जो who was dead and who was naked, unfortunately, and like she was taken over there. उसको उन्होंने काफी मारा पीटा, वो तो ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया वो किया, रेप किया, वो सब किया. But the fact is also कि when she was being taken into the Gaza, like it was the normal people on the streets who were spitting on her.
somebody made a very Douglas Murray actually made a very interesting comment to Pierre's show. उसने कहा कि even the Nazis, when they would actually do all those horrible and horrific acts, in the night they couldn't sleep, so they had to be totally drunk because they just could not handle what they were doing. But here in Gaza and in these areas, people not just handle what they are doing, they are actually delighted. वो फोन कर करके बताते हैं कि देखो हमने कितने मारे और कितना ये किया और हमने उसको कैसे मारा. That means they their conscience is not even hurting them like even Nazis was. So if that is the case, then I think like it's a very hopeless situation for Israel and for the world. ये रशीदा तलैब को सेंसर किया यूएस कांग्रेस ने. उसके बाद मैं देखता हूँ कि ईरान उमर चुप है, बहुत चुप है. शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट. क्योंकि आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि आई थिंक वो शिफ्ट जो है ना इजराइल की तरफ हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट का. तो ये जो उसको चुप किया देन लाइक एक तरीके से सेंसर करके will that have any effect in the say support for Palestine in the US Congress में होगा कि नहीं? अभी तो लग रहा है कि there would be a change from Palestine to Israel and I don't know why this change has occurred. I think mainly because के इसके पीछे ये हमास के पीछे I think सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि रशिया और चाइना, रशिया तो डेफिनेटली है और चाइना भी है, दोनों ही इसके पीछे इन्वॉल्व हैं. The thing is they understand that this is a proxy war that is going on and they cannot lose this war. Now कितने वो सच्चे हैं इजराइल के पीछे और कितने सिर्फ ये दिखावा है वो तो अभी देखने वाली बात है बिकॉज these guys are very heavily entrenched. अगर कतर ने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आई एम श्योर कि ज्यूज ने भी इन्वेस्टमेंट की होगी. But the Israelis just bombed the Qatar Hamas headquarters. Bomb किया yesterday. Right. In Qatar. And उसने protest किया. Why can't India do the same? I think India should do the same actually. Like in part, I think India is getting ready because I mean is like getting there because if you see कि वो अज्ञात जो मारने वाले असेलेंट्स जो हैं पाकिस्तान में रोज किसी ना किसी को तो मार ही रहे हैं. वो एक नया इंसान चला जाता है तो वो तो हो ही रहा है. ये हो क्या रहा है? अज्ञात लोग क्या कर रहे हैं? ये अज्ञात फोर्स चल रही है. तो अगर वो अज्ञात चल रही है किसी दिन ज्ञात भी चलेगी. बट ये कतार के ये जो अल जजीरा के जर्नलिस्ट हैं इंडिया में ओपनली घूमते हैं लोग एंड दे हैव द फ्री पास. मैंने कभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस देखा, ये लोग थे वहां पे. सो व्हाई मतलब इंडिया में दे आर अलाउड और यूएस में दे आर लीगल. यूएस में दे कैन बी इन वॉशिंगटन डीसी में दे हैव ऑफिसेज ओवर देयर. सो why they are being allowed? Because we all know Qatar is a front for the American agencies. But see the thing is this whole cloud of journalism is very very strong and they have established themselves as the global journalist. प्रॉब्लम यही है पूरी दुनिया में हमारी और even बाकी कंट्रीज की कि we have not been able to create that kind of media. I wish India ne, and I'm sure China and Russia also believe that they could have created some kind of a competitor to CNN and BBC like Qatar has created Al Jazeera. पर वो हमारा हुआ नहीं अभी तक. और ये like we can't stop them. It's just that we need to understand, we need to monitor them. तो monitor and control. अब बीबीसी को तो टैक्स का वो लगा के उन्होंने थोड़ा चुप करा दिया है. अब अल जजीरा के लिए क्या करना है वो उनको देखना पड़ेगा. Yeah, it is a major mouthpiece. और वो मेहदी हसन तो यहाँ पे टाटा लिट फेस्ट में आके बोलकर भी गया है. He was a chief guest, keynote speakers at टाटा लिट फेस्ट. Wow. और
इंडिया में like we have so many organizations जो indirectly support भी करते हैं इनको. Now हाँ. coming back to the American politics, ये जो war दिखता है अपने को, तो you have done a lot of analysis on this. Why the three aircraft carriers, American aircraft carriers standing in Persian Gulf over there? 3. You don't need 3 for Palestine. You don't need 3 for even Iran. ईरान के तो टोटल फ्लाइट प्लेन ही कुल मिला के 250 होंगे और प्लस उसके ड्रोन्स ज़्यादा हैं. ड्रोन्स हैं प्लेंटी ऑफ देम. एंड ईरान का हवा जो बनाया हुआ है, आई डोंट थिंक सो एनी इस्लामिक कंट्री हैज एवर वन ए वॉर. दे हैव सक्सीडेड इन टेरर बट नॉट ए वॉर. राइट, बट आई थिंक ईरान का जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके अंदर बहुत तगड़ा उसका क्लाउड है, एंड इट कैन बिकम अ बिग गेम चेंजर फॉर दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. And so maybe, so I believe that is one of the reasons like why like that would be there. But also, you know, they might, like it is actually like a way to tell Hamas, Egypt, because मैंने एक एक्चुअली अभी रिसेंट न्यूज़लेटर में लिखा था, बहुत सारे लोग ये समझ नहीं रहे दैट टर्की, जॉर्डन and Egypt have already readied their army and readied their military, and उन्होंने अपने forces तैयार करके रख लिए हैं. So, or same is the case with Iran. So, if all these countries are ready with their forces, then having those kind of military carriers in the Persian Gulf within a short distance of all these countries is actually a very, very important move, because it is a threat to them, obviously, and it is also a statement कि boss ऐसा है कि if you start like again go on the Yom Kippur war or a 6-day war kind of a scenario again, and this time it won't be just Israel, because like Israel is actually being pulled into 2 or 3 directions already. Lebanon से भी Hezbollah ने already bombing शुरू कर दी है, and that thing is that exchange is already going on, as has been happening in Gaza, and Iran is also getting ready. Like you said, उन्होंने वहाँ कतर में भी उसका हमास के उसमें अटैक किया है. So we are going to see an escalation. And when that escalation happens, I think that is why they are keeping that that presence there. In the event that somebody actually tries to do anything like that, they will strike. And I think there is, although abhi bahut clear nahi ho raha, but I feel that there is some kind of a element of even Pakistani involvement somewhere, because उनके पास PI के प्लेन चलाने का फ्यूल नहीं है, पर उन्होंने अपने गौरी, आई थिंक गौरी मिसाइल उसने अभी टेस्ट किया है. So basically I think that is a statement as well, that they are also ready. In Indian media yesterday I was seeing that there's a published article where how Pakistan has been sending weapons to or ammunition to Ukraine, and they वो public में भी आ गया, and Russia has also must have noticed it, other countries must have noticed it, right? 155mm shells Pakistan भी यूज करता है and Europeans भी यूज करते हैं. Russians 152 यूज करते हैं, 152. तो the shells are being supplied from Pakistan, or you never know कि most of these air forces are run by the Pakistani pilots, Saudi Correct. Arabia, Qatari, and so what is going to be the fate of the 8 Indian Navy officers who just stuck in Qatar? एकदम शांति हो गया उस एरिया में. हाँ, I think so मेरा ये विचार है कि ultimately at the end there would be forces which would have pushed Qatar, and Qatar would have actually taken them in, and in an attempt to actually start putting pressure on India
on Modi to back off from Israel. वो उन्होंने किया नहीं है. After some time, it will become a moot point. So, so unless India can find a leverage, I feel their fate will be something like Kulbhushan Yadav. Ke they are as good as gone for a long time. Unless and until like India can find a leverage against Qatar, which is very, very tough for to find out. Um, क्योंकि वो एक अलग ही एक उनकी एक ग्रुपिंग है एंड आई डोंट थिंक इंडिया हैज अ होल लॉट ऑफ क्लाउड देयर एंड इंडिया हैज टेकन अ डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन विल नॉट चेंज फ्रॉम इजराइल एटलीस्ट एज लॉन्ग एज मोदी इज इन द पावर. अब मोदी जी नहीं हो अगर पावर में और अगर कांग्रेस आ जाए तो फिर तो इंडिया का ही भट्टा बैठ जाएगा. तो बाकी और क्या उन हमारे जो बंदी हैं जो बना लिए उन्होंने उनका तो क्या कहना है. तो आई फील कि देयर फेट इज ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू बी लाइक कुलभूषण यादव अनफॉर्चुनेट. इंडिया में आई वाज इन द नॉर्थ एंड साउथ में पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ, आज भी इंडिया में ही हूँ. मैं आई कैन टेल यू मोदी जी का एक्सेप्टेंस इज ए ग्राउंड लेवल एवरीवेयर अक्रॉस द बोर्ड. ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे ऑन द ग्राउंड. लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम, सी व्हाट वी सी ऑल द प्रॉब्लम्स आर इन द मीडिया, सोशल मीडिया में, बट ऑन द ग्राउंड completely is different ball game altogether. Ground में people are seeing money in their banks, people are seeing money in their clean like the gas है लोगों के घर में. So all those things, people are counting those things. So for people it's a totally different way of decision making for the center in India. लेकिन मीडिया में जो दिखता है अपोजिशन नॉइज करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, बट दैट इज इन फैक्ट आई विल बी मीटिंग मोस्ट ऑफ देम टुडे. सब मिलने उनकी दिवाली फंक्शन में मुझे बुलाया गया बात करने के लिए, एंड सो आई विल बी गोइंग देयर टुडे आफ्टरनून. एक मेरे को क्वेश्चन है देश कपूर जी, बिकॉज ये मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है इस समय, एक चीज है किसी ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है, कोई भी, चाहे बोथ द साइड्स. तो यहाँ पे कोई डीप स्टेट का भी रोल दिखता है कि डीप स्टेट is aligned favorably towards India. नहीं तो ये लोग तो 2 मिनट में शोर मचाने वाले लोग हैं. Wherever the money goes, their attention flows. Correct. Why do you see that? What do you see? So व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस समय, ये सुबह का समय है यहाँ पर, तो लोग कम ही देखेंगे ये सब चीजें क्योंकि यू हैव टू गो टू ऑफिस. लेकिन अमेरिकन व्यूअर्स ज्यादा होंगे इस समय. सो फॉर देम दिस इज एन इंडियन अमेरिकन चैनल, और हम लोग वैदिक पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं हर चीज़ें, धार्मिक पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इंडियन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू. तो थोड़ा सा अलग आपका एनालिसिस लगेगा, इंडिया का एनालिसिस थोड़ा अलग रहता है. सो विद दैट डिस्क्लेमर, सो आप लोग देख रहे हैं तो यू विल सी हम लोग को वी मिस इंडिया, सो हम लोग ज़्यादा भारत की बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर लॉयल टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, दैट इज आल्सो right. So Absolutely. from this with disclaimer, what do you say कि ये अमेरिकन ने रिसर्च नहीं किया दोनों साइड से, और हमारे अंकित शाह जी ने बिल्कुल सही उसका एनालिसिस किया है कि इट इज डीप स्टेट इज ऑफिशियली ट्राई अलाइन विद इंडिया, ऐसा लगता है मुझे. नहीं, मैं उससे थोड़ा हटके सोचता हूँ. सी द थिंग इज आई डोंट थिंक द डीप स्टेट इज अलाइंड विद इंडिया. I still stand by my take के like what happened when Modi ji came to US के the deep state उसके दिमाग में बहुत क्लियर है. They want to work with India, they want to align with India, but without Modi. That I think they are very clear. Now, in this case, this particular case, जो Israel Hamas का है, it is just so happening that Israel or the Jews, at least within the US, have been able to force the deep state establishment to align with Israel. Because they have done that, that is why they are not saying anything against India जो stand India ने लिया है. However, they have not stopped their actions to counter Modi.
whether it is the election interference in Bangladesh or doing things मतलब within India, जो उन्होंने जो भी यहाँ उन्होंने वो लाइक इन्फिल्ट्रेशन करनी है वो उन्होंने नहीं छोड़ी है. और जो अब मेरे को ये देखना है, उसको जरा बड़े ध्यान से मॉनिटर करना है कि जो कांग्रेस और ऑपोजिशन जो है that is very clearly aligned to Hamas and to the jihadists. तभी उन्होंने came out and backed Palestine very very clearly. If that is so, then they are running actually counter to the deep state, but yet they are critical for the deep state to counter Modi. So it's a very so मैं एक ब्लैंकेट व्यू नहीं है इसके अंदर, इसमें नुएंसेस हैं फॉर ईच एंड एवरी एक्शन एंड फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव. There is a nuance kind of a support and nuance kind of a alignment that is happening, whether it is from the US or whether it is within India. So we have to be careful के एक लेके हम सब कुछ ना पेंट कर दें, क्योंकि ऐसा होगा नहीं और ना है ऐसा. अगर ऐसा होता, क्योंकि इंडिया हैज specifically with regards to Bangladesh, now India has said very very clearly, in fact India ने warn किया है US को. मतलब the word used was India has warned the US के do not interfere in the elections in Bangladesh because you are going to counter the democratic force and bring in the jihadist force, which is exactly what will happen if Sheikh Hasina goes, because Khalida Zia and that entire party which is backed by ISI and the jihadis, they are the ones who are Jamaat Islami, they are the ones who are going to come in then. So if that is so, there they are very clear, वहां पर कोई वो एंटी जिहादी उनका वो फंडा नहीं है. So they have told Sheikh Hasina, in fact, there was this news somewhere that they are pushing Sheikh Hasina to step down even before the elections, and which she doesn't want to do, and India also doesn't want that to happen. But what is going on? और उसके बाद फिर riots शुरू हो गए. ये riots शुरू ऐसे ही नहीं होते, मतलब there is obviously some kind of a subversion that happens in any society. That is why the riots actually start. So अगर वहाँ इतनी subversion हो रही है कि riots वहाँ start हो गए हैं right after Sheikh Hasina was warned and all those meetings happened, then I think Bangladesh is actually a dress rehearsal for what could happen in India for our election, like for India's election actually. जो इंडिया की इलेक्शन में क्या हो सकता है, राइट्स और बाकी चीजों को कैसे यूज किया जा सकता है. यस, ग्राउंड लेवल पे एक रियलिटी अभी है, पर उस रियलिटी को तोड़ने के लिए, बिकॉज वो बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर रहे हैं लोगों के दिमाग में जो डालने की कोशिश कर रहे हैं. एक तो ये है कि ऑब्वियसली माइनॉरिटीज को अपीज कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं कि हिंदूज को आपस में ही लड़ाए जा रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे भी हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ग्रुप्स एंड हिंदू थिंकर्स who are who were always traditionally with BJP, but now they are saying that the narrative that is being pushed to, within those circles is that Modi ji has not done enough for Hindus. And like I know, Anand Ranganathan also has written a book where he has clearly stated how he has not really helped the Hindus, which I can understand and I can believe like what he is saying, but it is also true that if Modi ji goes, the alternative that will come, as we have seen in Karnataka, as we have seen in Rajasthan, very very clearly, and earlier in Chhattisgarh also, the attack and backlash and persecution of Hindus will be at
an unprecedented level. So alternative for pushing Modi ji to do more for Hindus is not to take him out. It is to actually bring him back, but ask him to still do more. And even though Hindus, जो Hindu activists हैं, they may think that they are greater Hindus than anybody else. Some actually like believe that they are the greatest Hindus and thinkers and everything else. But they have to understand that nobody knows the realities of geopolitics and like whatever is shared and not shared by the intelligence, as well as Modi ji and his team does. So if there is a decision that needs to be made, it will be made. Because मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, एक यहाँ थिंकर हैं, लाइक आई एम श्योर एवरीबडी नोज हिम, मिस्टर कॉनरेड एल्स्ट. मैं उनके साथ यही डिस्कस कर रहा था कि सी देखो ये like we have to understand it's not just about like people think just because Modi ji is there that they are also there. Winning power at that level, at that regularity, with that kind of a scale is unprecedented in India, is unprecedented in any country. इंडिया में इंदिरा गांधी ने खालिस्तान मूवमेंट शुरू करवाई थी फॉर विनिंग द 1985 इलेक्शन. दैट्स हाउ टफ इट इज. And an election that she could not see herself because of like what she had done. That is the kind of things people get into to win elections. So winning election एक चीज होती है, उसको कायम रखना उस पावर को दूसरी चीज होती है, और खुद को कायम रखना, खुद को जिंदा रखना जब इतने सारे तुम्हारे खिलाफ एनिमीज हो, दैट इज अ थर्ड थिंग. जो लोग अपने मोहल्ले की इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो बात करते हैं कि मोदी जी को कैसे हटाना चाहिए और कैसे हम हिंदू जो हैं वो बाद में हम ये डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है. आप मोहल्ले का इलेक्शन नहीं जीत सकते. अडवाणी जी, वाजपेयी जी एंड मुरली मनोहर जी बहुत ग्रेट लीडर थे, but the fact is that they could not win the power. Without power, you have absolutely no way to do anything. True, absolutely true. So ये भूल जाओ. जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे ना कि आप इलेक्शन जीत सको, और इस तरीके से जीत सको जिस तरीके से मोदी जी जीत रहे हैं, तब सोचना किसी बात पे. तब तक you have to work hard to actually push BJP to make changes that need to be made, because the alternative is Karnataka and Rajasthan. What is happening there? और राजस्थान में मैक्सिमम काउ किलिंग हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है मैक्सिमम. सारा जो सनातन धर्म पे आप लोग जो हिंदू कंप्लेन करते हैं, विमेन के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज इन राजस्थान आर द हाईएस्ट राइट नाउ, हाईएस्ट. और ये जो सब पाकिस्तानी हिंदूज के साथ हुआ है वो सब जानते हैं वहां क्या हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने तो केरला में जाके उन लोगों को बोला कि कुछ लोगों से मुलाकात हुआ था सबसे. मैंने उनको बताया कि ऐसा ना हो कि कश्मीरी हिंदू जैसे रेफ्यूजी बने थे आप भी बनेंगे. इस बार भारत रेफ्यूजी स्टेटस के लिए तैयार नहीं है, तो यू हैव टू स्टे हियर एंड फाइट इट आउट. और केरला में जो बीफ और ये सब जो हिंदुओं को पसंद नहीं है, वहाँ पे तो खुलेआम बिकता है. एंड सम ऑफ द हिंदूज हैव रिजाइन्ड टू देयर फेट, एक्सेप्ट कर रहे हैं. मतलब उन दुकानों से भी खरीदते हैं जहाँ पे गाय का मांस बिकता है, वो हर जगह है. वहाँ पे मतलब मीट शॉप में दिखता है. एंड सेम फ्यूचर इज गोइंग टू कम हियर. अभी एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बचाना या सनातन धर्म को बढ़ाना, बचाने की तो बात नहीं है, बढ़ाने की बात है. वो तो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है. क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ अगर जो लॉज हैं उस पर गवर्नमेंट हटा सकता है, वो हटाना भी चाहिए. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी मेरी है, हमारी सबकी है. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे
इतने बड़े बड़े इवेंट्स जहाँ पे मैं गया, कितने लोगों को मालूम है कि मंगल आरती हर शहर में होती है, हर मंदिर में। कितने लोग जाते हैं मंगल आरती में? हिंदू लोग। मतलब व्हाट्सएप पे कमेंट करना बहुत आसान काम है, लेकिन मंगल आरती में कितने लोग जाते हैं? सारे मंदिरों की जो हरिनाम फेरी होती थी वो बंद हो चुकी है। पहले रेगुलर थी। मेरी नानी, मेरी दादी सब बताते हैं हरिनाम लोग करने जाते हैं, शाम को जुड़ते थे लोग आपस में जाके टहलने के नाम पे हरिनाम करके आते थे। वो सब बंद हो चुका है। तो हाउ हाउ कैन यू कंप्लेन जब आपने ही वो प्रैक्टिसेस बंद कर दिए? मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ आसपास मैं ढूंढ रहा था कोई छोटा सा मंदिर, 1 किलोमीटर के ब्लॉक में कोई मंदिर ही नहीं। शायद छुपा हुआ हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन 1 किलोमीटर में भी सुबह वॉक करके आया, मुझे कहीं नहीं दिखा मंदिर के, एक छोटा सा मंदिर भी नहीं दिखा जहाँ पे मैं थोड़ा प्रणाम करके आऊँ, नहीं दिखा। तो लाइक ये सिर्फ ये नहीं है कि मोदी जी सारा काम करेंगे और कोई और, बिकॉज ये तो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धर्म मोदी जी के लिए नहीं है, देश उनको देश में बड़ी बड़ी चीज संभालने के लिए रखा है। हम लोगों ने वोट दिया उनको, मैं हम लोगों ने नहीं, मतलब इंडियंस ने वोट दिया है। तो लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारा है। और उसमें तो लॉ, कोई भी लॉ आपको मना नहीं कर सकता। आप तो छुपे छुपे भी कर सकते हैं। मुगलों के राज में तो लोग छुपे छुप जाके करते थे सब काम। सो अच्छा, कमिंग टू डिफरेंट टॉपिक राइट नाउ, इधर जैसे ये अभी जो गाजा में जो चल रहा है, बॉम्बिंग हुआ, और इतना बॉम्बिंग कि ये 10 साल का बॉम्बिंग अफगानिस्तान का इसने 1 महीने में कर दिया है। और एंड ट्रक लोड, लेकिन मूवमेंट इज वेरी स्लो। इसका क्या रीजन है? लेकिन at the same time, I respect the bravery of Israeli soldiers. They're going house to house, not like the American soldiers. ये लोग मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, वो house by house they are going to search for hostages as well as for the Hamas terrorists. Yeah, I think the real reason for the slow movement is कि वहाँ hostages हैं उनके. अगर वहाँ hostages उनके ना होते, so then the movement would have been faster, because what they are trying to do is actually they are making, like, I think they are actually following the hostages. They are trying to get them back, and these guys, the Hamas guys, are trying to use that as leverage as long as they possibly can. And that is why, one, the movement has been slow, but also they are, instead, I mean, in some cases, obviously, like in most of the Gaza, they have been bombing very, very heavily, because they're obviously not on the surface. But on the surface, अगर वो चीज़ों को अगर नीचे ढा दें, then it is easier to get to the tunnels. So the real fight, the real battles are going to happen in the tunnels. And we have seen अभी कल जो उन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया कि how under the hospital those people were being kept, and diapers the, baby bottles the, and all those things, and ropes were there, and probably they were वहाँ उनको बंदी बना के रखा हुआ था. So what they are doing is they are going one place to another, trying to follow those hostages, or जैसे उनको information मिलती है, to get them back as much as they possibly can. If either they are all gone or they get them back, in both the cases, if that happens, then the things will become even faster. And in terms of जो next उनका जो वो है, जो level है, उनका यही है कि like they are just trying with all their intelligence to get their hostages as much as possible back. ये कितने दिन तक ऐसे चलता रहेगा, वो बिल्ली चूहे का खेल जो ये हमास कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है. But other than that, they are not going to stop until they actually make it impossible for the Palestinians to keep supporting Hamas there. वहाँ हमास के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. वो उन्होंने ऐसा कर दिया है, और ऐसे ही और इसी प्लान पे आगे चल रहे हैं.
Now, the thing is, at what point would they, at what point will Iran and the other forces realize or at least feel that they have to enter the whole thing, because now the things have gone even, you know, like completely gone for them? Because Gaza is a very main control, area for all these people against Israel. If Gaza completely goes out of hand for Iran as well as the other forces that they have, then they have far lesser leverage against Israel. So, so उनके जो पीछे बैठे हैं, ईरान के पीछे जो बैठे हैं, चाइना, रशिया और ईरान itself, and all the other Middle Eastern forces, they will already being, वो कैलकुलेशन उनकी चल रही होगी इस समय कि कितनी देर तक इनको ये चीज करने देनी है before the escalation happens, and that escalation is what is going to be more devastating for the world. So I think लास्ट टाइम जब शी जिनपिंग ऐसे किसी समिट से जब वापस गया था, तो वहाँ चाइना में वो जितनी बार वापस जाता है ना ऐसे समिट से, वहाँ पर कुछ उनका स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है और उसके बाद कोई ना कुछ लाइक मेजर होता है. जैसे पहले ओलंपिक्स था, तो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे. इस बार हुआ तो ये इजराइल का अटैक हुआ वो एशियन गेम्स में. तो but there is something that keeps like happening. इस बार ये यहाँ से जब वापस जाएगा सैन फ्रांसिस्को से और यूएस से, like I'll be, like we should really watch very carefully what happens next. नहीं, एक्चुअली जो मैं इंडियन एजुकेशन के ऊपर मैं बात कर रहा था लोगों से, एजुकेशन सिस्टम में जो सिखाया गया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इतना उसमें पार्शल है कि उसमें एग्रेसर का डेफिनेशन नहीं है कहीं पर भी. कौन एग्रेसर है, किसने शुरू किया, उसके बारे में बात नहीं होती कहीं पर भी. ये बात हो रही है कि अभी कि हु इज द विक्टिम, सिर्फ यही बात हो रही है. बट अगर विक्टिम वाज द एग्रेसर, उसकी बात नहीं हो रही है. सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट एग्रेसर एंड डिफेंडर. तो जहाँ पे कर्म का ही सिद्धांत नहीं है, एग्रेसर कौन है. अभी किसी ने आकर अटैक किया, अभी जैसे कौरवों ने अटैक किया, तो लॉजिक तो वही था, वो 100 भाई थे तो 5 मरने चाहिए थे, लेकिन वो 100 के 100 मर गए, यहाँ पे 5 भी नहीं मरे पांडवों के बीच में, क्योंकि वहां पे एक क्लियर था कि शुरुआत कौन कर रहा है बार बार. तो सबको मालूम है दुर्योधन ने शुरुआत किया है पूरे युद्ध का, और दुर्योधन की वजह से ही सब लोग मरे. लेकिन दैट कॉन्सेप्ट इज गॉन अवे नाउ. तो justice can never be done now in this Kali Yuga, right now, in this modern current context, because there is no clear definition of aggressor versus defender. और ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा विक्टिमहुड मेंटालिटी को ही प्रमोट करते हैं कि लाइक विमेन आर ऑलवेज द विक्टिम. ये इस्लामिक टेररिस्ट आर आल्सो ऑलवेज द विक्टिम, उनके परिवार सारे विक्टिम हैं. सो देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज नो से, और वाइट गिल्ट की वजह से द एंटायर वेस्ट इज साइलेंट. वो तो डगलस मरे ने कुछ बोला, मैं आई डोंट एग्री विद हिम फुल्ली, like what he said from Maoris and New Zealand people and the Aborigines is totally wrong. Native Americans के बोला they are very violent, so he is still part of the colonial agenda. But he's shocked that colonial agenda is being used against them now. That's why he's shocked. That's why थोड़ा simple बातें कर रहा है. But otherwise, if I look at from Indian perspective, धर्म के perspective से, then you are missing the point. You are the one who colonized everywhere else. Correct. You are the one who created this Palestine problem in the first place. You know, at that time, you should have given the entire land to Israel. Lekin that time the church intervened, and you could not give the entire. You created pockets so that Jews cannot live happily. They created 1947 से पहले कोई Palestine था ही नहीं. Correct. So now this is a historical fact. लेकिन nobody is going to mention that, क्योंकि nobody wants to say clearly define who is the aggressor, who is the defender.
So now हम्म in this historical context में अगर आप देखते हैं इसको, last question रहेगा, and then we'll take questions also, people can ask. हम्म कि what कि इसमें now in this scenario इंडिया का क्या रोल होना चाहिए? मैं पहले अपना पक्ष रखता हूँ so that people can know. मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया शुड मिलिटरीली गेट इन्वॉल्व इन एवरीवेयर, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए भारत के बाहर से ही सुरक्षा शुरू करनी पड़ेगी. लाइक महाभारत के समय में भी हस्तिनापुर की सेनाएं किर्गिस्तान और मध्य देश इधर ऑपरेट करती थी सारी सेनाएं. इसलिए भारत में कोई आक्रमण नहीं होता था, क्योंकि उनको पहला लेवल ही नहीं क्रॉस कर पाते थे वो लोग. तो कोई आक्रमण ही नहीं. यहाँ पर यहाँ से 800 मील की दूरी पर लड़ाई चलती थी, 600 मील की दूरी लड़ाई चलती थी. भारत में कोई युद्ध ही नहीं चलता था, क्योंकि भारत में इट वाज ए कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल. तो व्हाट डू यू सी द इंडियाज रोल? मेरे हिसाब से तो मैंने आपका पक्ष रखा है. व्हाट डू यू सी? No, I agree with you, but I think the greatest lesson that we have to learn is about information dissemination. जब like I'll give you an example. इस पूरे जो इजराइल हमास का जो ये युद्ध जो चल रहा है, इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पता है क्या था? जब इजराइल ने सारी जितनी एट्रॉसिटीज हुई थी उसकी एक मूवी बना के सारे जर्नलिस्ट को दिखाई थी. Journalists could not come back from there and remain normal. They were just violated. After that, and whatever they have talked everywhere, after that, the whole public जो sentiment है वो ही change हो गया. When the public sentiment changed, at that time it was easy for the political establishment to also change, at that time. The problem is that India had multiple points. I'll give you an example. जब बालाकोट में जब इंडिया ने अटैक किया, हमने भी वो इजराइल वाला जो वो बंकर बस्टिंग बम था वो यूज किया कि पहले वो जाता है, छेद करता है, एंड देन द अदर वन गोज एंड लाइक किल्स. बट व्हाई? उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देते ना, आसपास की 4 बिल्डिंग और उड़ा देते. द थिंग इज के एंड जो कुछ भी हुआ उसको लाइक इट शुड हैव बीन वेरी क्लियरली एंड ओपनली एंड पब्लिकली, जो उरी में हुआ, इट शुड हैव बीन ओपनली एंड पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड कि कितनी बारबेरिज्म हुई थी. सेम इन व्हाट हैपेंड इन द दिल्ली अटैक्स, right? What happened in the farmer attacks, that should have been presented much more forcefully, much more in more detail, क्योंकि बहुत कुछ बुरा हुआ था. एक इंसान को तो उठा के वो काट के वहीं मार दिया था उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पे. Not many people knew that. That should have been the opening remark against Rihanna, against Greta, against all these toolkit people, because that is how the Israelis and Jews are fighting. And हम तो हमारे खिलाफ इतना कुछ होता है, हम लड़ते भी नहीं है. तो जैसे जब वो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ जो कुछ हुआ था, और उनको बहुत क्लियरली बताना चाहिए था कि क्या क्या हुआ है. Yes, हमारे लिए ह्यूमिलिएशन की बात है, but more than that, it is about changing the public perception of these people. It is a known fact that what happened in 1971 by Pakistan, the Pakistani army, जो कुछ भी उन्होंने बांग्लादेश में किया, वो उन्होंने रेप कैंप्स खोले जिसमें 2-3 लाख औरतों को वो रोज रेप करते थे, टू अ पॉइंट वेयर दे कुड नॉट बी रेप्ड एनीमोर. दैट्स हाउ मॉन्स्ट्रस दोस पीपल वर. Pakistani army, I don't call it like as an army, it's a group of war criminals. But India did not bring that up. And one of the reasons why India did not bring them up is because Indira Gandhi actually thought that would benefit her opposition. That is also a fact. But अब क्या प्रॉब्लम है?
अब क्या प्रॉब्लम है? ये सब चीजें, जब भी ऐसी कोई चीजें होती हैं हमारे खिलाफ, दैट शुड कम आउट वेरी वेरी क्लियरली, एंड हम उसको और ज्यादा उसको लाइक यू नो ओपनली और वेरी क्लियरली उसको डॉक्यूमेंट करके उसको दिखाएं, बिकॉज दैट चेंजेस पब्लिक परसेप्शन. दैट इज वन very 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 important thing that we have always missed. Second, like you are saying कि मतलब हमारा पहले था ऑफेंसिव डिफेंस, अब आई थिंक इट इज ऑफेंसिव ऑफेंस. ये लाइक दैट इज वेयर I think the new way of the establishment, the Indian establishment is going. And I think like that is the right way to go, because मैं अक्सर मैंने ये बहुत बार ये बात की है कि जब राजा दाहिर को मारने के लिए, जब वहां से वो कौन था, आई थिंक वो गजनी था जो आया था मारने के लिए उनको, लाइक उनके खिलाफ, मुझे याद नहीं आ रहा लाइक हु वाज द पर्सन हु वाज लाइक हु अटैक्ड, वो राइट? था was मोहम्मद he मोहम्मद was बिन a time तुगलक? नहीं नहीं नहीं. राज दहीर के साथ लड़ा था, वो था मोहम्मद एक नाम याद आ जाएगा, because हाँ, he's one of the people who ran away from he was part of the family of Muhammad, it seems. करेक्ट. And हाँ, राइट. सो बेसिकली अगर उस समय जब हमें पता चल गया था कि इनका सोचने का, काम करने का तरीका क्या है, उस समय the Indian kings should have actually gone all the way to Arab and to the Middle East and finished those kind of bloodthirsty tribes off. correct. That is what should have happened. हम वेट ही करते रहे हर बार. जब वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ वो गोरी आया, उसको एक बार मारने के बाद वहां जाके उनको पूरा खत्म कर देना चाहिए था, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. पर हमने किया क्यों नहीं ये कभी? बिकॉज बिकॉज हम सिर्फ डिफेंस में लगे रहे. और डिफेंस, डिफेंस में ज्यादा एनर्जी लगता है, डिफेंस में हाँ, ज्यादा एनर्जी एंड डिफेंस में यू ओनली हैव टू मेक अ मिस्टेक वंस once. and you're gone. So that is why defense is good, but offense and going at the source of that offender and the aggressor is far more important. And I think finally I believe the Indian establishment is thinking along those lines, it seems. फाइनल एक सोच तो बदला है, आई कैन सी दैट हैपनिंग. एंड आई थिंक इंडिया का जो लेफ्टिस्ट मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी शायद सोचेगा इस बारे में, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का एग्जिस्टेंस खत्म होता है किसी भी चीज. हम लोग तो भाई वी आर नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, वी आर धार्मिक, लेकिन हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इन लोग के साथ बहुत कुछ होगा जो जो इन लोग के साथ रहते हैं. दे आर द फर्स्ट एनिमीज. वो तो दीस गाइज आर क्रेजी पीपल. अच्छा, वो जर्नलिस्ट भी लेकर गए थे, ये गाजा के जो टेररिस्ट थे, जर्नलिस्ट जो पिक्चर ले रहे थे, अभी इजराइल ने उनको भी अरेस्ट करना शुरू किया है, क्योंकि दे आर वाचिंग इट. करेक्ट. मैंने देखा कि आई थिंक इवन CNN के जर्नलिस्ट थे. यस, सीएनएन के भी जर्नलिस्ट थे, दे विल बी राइट. ट्रैक्ड. अभी मैं एक ऑस्ट्रेलियन कपल को मिला यहाँ पे, और मैं उनको पूछ रहा था कि वॉइस वन वोट क्यों रिजेक्ट किया. वॉइस वन ऑस्ट्रेलिया में वॉइस वन हो रहा था ना, क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो तो अबोरिजिन्स बोलते हैं, दे आर लेस इन नंबर, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव टू सी whether they have the same rights like everyone. I said, why you speak about human rights now? So you are a colony. और इंडिया ने उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है. why we are condoning such activities even now? हम लोग को एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम लोग पॉइंट करें ताकि अबोरिजिन्स को राइट मिले. Like we can put some pressure like that. Why Right. we are not doing? But I think, see, in all fairness, we have to see that there are larger geopolitical battles also involved here. मतलब बीच में चाइना भी involved है. So are Maoris and Aborigines there so important for India? At least ठीक है, वो धार्मिक है and all those things. लेकिन उसके लिए अलग तरीके हो सकते हैं. But
in terms of this kind of a battle, I think ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाइक ऑस्ट्रेलिया के साथ रहना बहुत जरूरी है फॉर वर्किंग अगेंस्ट चाइना. अपने That भाई is लोग जो देख रहे हैं फ्रॉम इंडिया, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस इज फॉर द अमेरिकन टाइम. अमेरिका में रात है इस समय, वहाँ के लोग रात के समय देख पाते हैं, वहाँ के लोग भी काम करते हैं. तो फॉर दिस वी आर डूइंग इट इन द मॉर्निंग ऑफ इंडिया, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे. विल डू द शोज इन द इवनिंग फॉर अमेरिका, सो पीपल इन यूएसए कैन आल्सो वॉच. अच्छा, right. एक इसमें यू कैन सेड अ वेरी गुड पॉइंट कि वी हैव टू सी अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ भारत में, कि व्हाट लार्जर इंटरेस्ट, क्योंकि एग्जिस्टिंग रियलिटी को वी कैन नॉट चेंज व्हाट इज द रियलिटी राइट नाउ. तो एक एक क्वेश्चन आता है फॉर द इंडियन यूथ, जैसे कि भारत में, like I said before, it is the responsibility of the Indian youth to come up. और डरने की बात हर जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि भाई अभी डर छोड़ दो. भयम मृत्यु भीषण स्यात्, मतलब भगवान विष्णु से तो भय भी भयभीत रहता है. तो वो तो छोड़ देना चाहिए, भय तो छोड़ देना चाहिए, बट ऑल्सो प्रोएक्टिवली गेट इन्वॉल्व इन स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी, क्योंकि वो तो रामायण महाभारत के बेसिस पर ही होने वाला है, गीता के बेसिस पर ही होने वाला है. टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी एंड वनवासी आदिवासी से बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के हम सभी मूल निवासी हैं. भारत में रहने वाले सभी लोग आदिवासी ही है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं. आदिवासी मीन्स लिविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वी लुक, Correct. हमारा स्किन कलर भी सेम है. एंड एक तरीके का जो डिफरेंशिएशन होता है कि दे आर नॉट एजुकेटेड एंड वी आर एजुकेटेड, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वहाँ पे एजुकेशन को लेकर जाए इंडिविजुअली, not leave it to the government agencies and other places. So thank you very much, Desh Kapoor Thanks. ji, and please watch his newsletter Drishtikon .com पे जाके subscribe it so you can get access to it, or support him also, because this kind of analysis needs a lot of support. He does it. Indian Americans अपने खर्चे पर ही सब कुछ करते हैं, हम लोगों को कोई स्पॉन्सर नहीं करता है. एंड इंडियन सही बात है. अमेरिकन अपनी इनकम यूज करके करते हैं. मतलब भारत में तो आपको फंडिंग वगैरह हो जाता है, लेकिन हमारे को नहीं होता कहीं पे भी. वी ट्रैवल टू इंडिया आल्सो ऑन आवर ओन एक्सपेंस राइट. एवरीवेयर. और तो कई बार कोई गड़बड़ हो जाए, कोई अगर हमारे ऊपर सू कर दे तो हमें खुद ही लड़ना पड़ता है वो. खुद ही लड़ना पड़ता है इंडिविजुअली, हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं रहता है, you know. हमारे लिए कोई So we सपोर्ट. are we do everything out of our love for our culture and Bharat and also America. So राइट. एक कुछ कमेंट्स में ले लेता हूँ. Any questions are there, you can ask us. तो इनका कमेंट है SKG90, do like share support Sattology, ताकि हमने कोर्सेज चलाएं and we travel all over the place. मेरा next trip is coming for Tulum, so that one in Mexico, you'll be shocked with the information that we present over there. और for good news for all the audience who are watching, रामायण में जहां पर हनुमान जी ने छलांग लगाई थी लंका के लिए महेंद्रगिरी, उसका पिक्चर्स फर्स्ट टाइम मैंने उसको पब्लिश किया है, एंड आई हैव शोन एवरीथिंग अरे वाह. एवरीवेयर. सो द एग्जैक्ट स्पॉट जहां से जो कूदे थे, और उसका बहुत सारा क्रॉस रेफरेंस मटेरियल भी है फ्रॉम द प्लेस इटसेल्फ. वाह. एंड द टोपोलॉजी हैज चेंज्ड, एंड उसके जो प्रोग्रेशन है फ्रॉम रामायण काल टू नाउ, I'll work with Nilesh ji and other people to make sure we present it more scientifically. और उसके एकदम साउथ में कूद मारी थी, तो then it is goes to लंका straight. और रंगनाथ जी की आंखें साउथ में देख रही है, ईस्ट में नहीं देख रही है, तो वो भी कंफर्म है. वो इस बार मेरे दर्शन में मुझे दिखी, ठीक से मैंने देखा रंगनाथ जी की आंखों को. अच्छा, इधर कमेंट है, इट्स जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, they just want to milk profits out of India, suck out the soul since China is closing down. What do you say on this, Desh? Yeah, that is like very clear because well, in terms of the deep state, like I said, they want India but without Modi. So they understand that India is a very rich economy now, and it is growing very fast. So इनके पास ये तो पता है कि इनको कि इंडिया के पास और इंडियंस के पास काफ़ी वेल्थ भी है और कैपेबिलिटी भी है वेल्थ प्रोड्यूस करने की. Now, but they want to control that. So, but they also understand कि after China, this is a place to be. तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली मतलब जो आप कह रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला वैसा ही कुछ है सिचुएशन. बट ये हमारा
अगर हम सक्सेसफुल हो गए मोदी जी वापस आने के लिए, then I think like this can be pushed back. But the deep state, they have gone against Putin, Bolsonaro in Brazil. So that's what they're doing. So उनका कंट्रोल करना है. Dr. Saurabh, good evening from Baltimore. Good evening, Dr. Saurabh, and welcome to the show. और आप जुड़े हमारे साथ ना late night, so it is very good. Thank you Desh Kapoor ji, and thank you all the viewers for watching. हम लोग Thank फिर you. मिलेंगे एक live show के साथ from the USA. I'll be back in the USA tomorrow, so then we'll see you there over there. Till then, Thank you. हम लोग मिलते रहेंगे, and we'll talk more on current topics as well as our core Sattology research.